डिग्री लिविंग में। तो जैसे कि आप लोग देख रही है बॉक्स एक रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मैंने ऑर्डर किया है मार्बल एग्जीक्यूटिव चेयर। तो देखते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे अनबॉक्सिंग करने के लिए। क्या मिला है चलिए देखते हैं, आके शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं ये बॉक्स का हालत देख रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा ये प्रोडक्ट सही तरीके से पहुँचा होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है, डैमेज निकला हुआ प्रोडक्ट, टूटा हुआ है। ये लगता है चेयर का बैक स्टैंड होगा नहीं। ये भी चेयर का ये आर्मरेस्ट है। फ्रंट बैक लेफ्ट राइट साइड। और ऊपर पे जैसे मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सॉफ्टनेस है, ऊपर उतना रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। ये जैसे कि देख पा रहे हैं नीचे का व्हील पार्ट, इंस्टॉल करने के बाद ही इसे पहचान पाऊंगी, देख पाऊंगी कितना करेक्ट तरीके से ये वर्क कर रहा है।
ये है बैकरेस्ट का पार्ट। ये बैकरेस्ट का पार्ट, इसका भी सॉफ्टनेस काफी ठीक है और इसमें लगता है स्वेट वगैरह आपको नहीं होगा, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये है बैक व्यू इसका चेयर का। लुक तो शानदार है, देखते हैं इसको सेटअप करके कैसा होता है। ये भी फ्लेक्सिबल है, यहाँ एक फ्लेक्सिबल है और एक यहाँ फ्लेक्सिबल है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ आपका बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करके मैं समझ पाऊंगी क्या प्रोडक्ट नेगेटिव में ज़्यादा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं तो देख पा रही हूँ आया है। तो ये रहा पूरा व्यू। एक्चुअली इस चेयर का पूरा सेटिंग जो मिला है ये मिला है। अब देखते हैं इंस्टॉलेशन करेंगे तब क्या एक टूटा हुआ मिला है, फिर देखते हैं क्या होता है इंस्टॉलेशन के बाद। फिर आपको मैं अपलोड करूँगी इसका इंस्टॉलेशन।